Hi all, welcome to Competition Exam Cracker. In this video, we'll be covering the third part of Barron's 800 words with easy to remember images. And if you want to refer to the past two videos, so kindly visit the channel and go through that as well. That will be helpful for your exam. Let's start. And the 41st word that we have is antecedent, which means that something comes before. And इसको आप ऐसे भी remember कर सकते हो कि there is a word called precedent. And that means जो आगे आने वाला है. And if the word is there with anti, so उसका मतलब होता है पीछे. So antecedent means something that comes before. You can connect it with the images given below. कि Dr. Manmohan Singh is antecedent of Prime Minister Narendra Modi. Moving to the next word. The next word that we have is antediluvian, which means prehistoric. And हमने पिछले वाले word में भी देखा कि anti means कुछ पुराना. And here as well, we are getting the same word, which means कुछ पुराना चल रहा है. And through that, you can connect it. And referring to the image, you can easily consider कि कुछ तो history के regarding ही है. Moving to the next word, that is antipathy. अब इसको आप ऐसे भी remember कर सकते हो कि the word anti means negative. And आप इसको path पढ़ सकते हो. तो अगर किसी का path negative हो जाता है तो क्यों होता है? Because of the dislike or kind of hate that we have. So antipathy means dislike or hostility. So moving to the next word, which means apathy. Ab as we remember in the last word as well, कि anti means negative, means absence. So absence of path. तो जब absence of path है, the reason behind that is कि वो किसी चीज में enthusiastic नहीं है या interested नहीं है. So these words mean the same, indifference or the feeling of not being interested in or enthusiastic about anything. So उसके पास कोई path ही नहीं है, without path है. The reason behind that is कि वो interested ही नहीं है. So moving to the next word. Next word is apex, which means the highest point, and it is a widely used word. So I believe that it is not very difficult to remember this word. And through this image also, you can remember it really easily. So moving to the next word, apogee, which means the point in an orbit most distant from the body being orbited or the highest point. So through this, you can cover two words. One is perigee, other is apogee. And this is kind of scientific word, तो ये ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है. But still, for the sake of being safe, you can remember this word as well. ये वाला point जो सबसे नजदीक होगा, that will be known as perigee. And ये वाला point जो सबसे distant होगा, that will be known as apogee. Right. So through this you can remember these two words, and both are exactly opposite. तो आप उसको easily remember कर सकते हो. Moving to the next word, which is apothegm, which means a terse or witty saying. And Mr. Jaishankar is describing this word very beautifully. So आप इनसे भी इनको remember कर सकते हो. And अगर आप ये word तोड़ के इनको remember करना चाहो, so a PO, the GM. So a PO means a public officer. The GM, the government minister. So आप इसको इस तरीके से भी remember कर सकते हो. And because he was in the civil services, so एक public officer से एक government minister. So in this way also you can remember it. So अगर इनका चेहरा आपको याद आ गया. Moving to the next word. The next word we have is appease. And इस word में आप peace ढूंढ सकते हो. And अगर इसको आप peace से connect कर लोगे तो काम अपने आप मिल जाएगा. So it is very easy word to remember. Just connect it with peace, and peace से आपको to calm, pacify मिल जाएगा easily. So moving to the next word. Next is appellation, which means name. So आप इसको ऐसे भी remember कर सकते हो कि अगर आप कोई ऐप बना रहे हो तो उसका पहला चीज आप क्या रखने वाले हो. ऐप पहला. So उसका पहला आप उसका नाम रखोगे. The name of that particular app or anything. So through that you can remember it कि इसका मतलब name होता है. Moving to the next word. Next is opposite. And ये opposite का exactly opposite है, which means appropriate or relevant. So it is very easy word to remember. Just the thing कि A लगा है, so it will make opposite a negative word. And opposite itself is a negative word, which make the overall word as a positive word.
So apposite means appropriate. Moving to the next word. Next is apprise. एंड अगेन आप इसको एक स्टोरी से याद कर सकते हो कि इफ यू आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल इन आईटी कंपनी, तो अगर आपका ऐप का नंबर राइज हो रहा है, सो व्हाट द फर्स्ट थिंग यू विल डू? सो फर्स्ट थिंग यू विल डू इज टू इन्फॉर्म योर बॉस. सो ऐप राइज कर रहा है, सो यू नीड टू इन्फॉर्म. So in this manner you can remember it. So this make it very easy to remember this word. Moving to the next word. Next is approbation. And if you want to connect it with the people from North India or from Bengal region, so approval को approval बोलेंगे. वो V pronounce ज़्यादा नहीं करते some people. So आप उसको इसके साथ रिलेट कर सकते हो कि ये approbation है तो approval है, और अप्रूवल इज सेम. सो आप थोड़ा सा वर्ड प्ले करके इसको रिमेंबर कर सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट. एंड अगेन दिस इज सिचुएशनल, सो आप इसको इस इमेज के साथ भी याद रख सकते हो. अदरवाइज इट इज अ वाइडली यूज्ड वर्ड, सो आई डोंट थिंक यू विल फाइंड एनी डिफिकल्टी टू रिमेंबर दिस वर्ड. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज apropos, which again means relevant. एंड थ्रू दिस इमेज यू कैन कंसिडर कि ये उस टाइम पे बहुत रेलेवेंट था ड्यूरिंग कोविड, बट अब ये उतना रेलेवेंट नहीं है. ऑल्सो इफ यू वांट टू रिमेंबर इट विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड, सो इसको आप प्रपोज की तरह पढ़ सकते हो. एंड प्रपोज शुड बी रेलेवेंट. आप सही पर्सन को प्रपोज करना है, सही तरीके से प्रपोज करना है, अदरवाइज इट वोंट वर्क. सो आप इसको ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हो कि अ प्रपोज शुड बी रेलेवेंट. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. The next word that we have is arabesque, which means ornate design featuring intertwined curves. And अगर आपको इसको easily remember करना है, so आप इस word को तोड़ सकते हो. And Arab is a group of country. And if you closely observe this word, तो MO को छोड़ के बाकी सारा mosque की spelling है SQUE. So अरब का mosque. सो यू कैन रिमेंबर इट कि मॉस्क है तो मॉस्क का डिजाइन कैसा होता है, कर्व्स होते हैं. सो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज आर्कियोलॉजी, व्हिच मींस द स्टडी ऑफ मटेरियल एविडेंस ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ. एंड अगर आप इसको क्लोजली पढ़ो तो ये आर्क है और ये लॉजी है. लॉजी मीन्स टू स्टडी, एंड आर्क आप इसको ARC का आर्क समझ के पढ़ो, व्हिच मीन्स a curve kind of structure. So curve kind of structure पुराने जमाने में ज्यादा होते थे in buildings and all. अभी के buildings काफी modern होते हैं जो straight line पे ज्यादा follow कर रहे हैं. So arcology, so curve kind of structure अगर आप पढ़ रहे हो उसके related, which means कि कुछ तो past time की बात हो रही है. So through this you can remember it really well. Otherwise it is a widely used word, so I don't think कि आपको इसमें कोई difficulty होगी to remember this word. Moving to the next word, ardor. एंड ये आपको थोड़ा सा इमोशन एंड पैशन के रिलेटेड है, और अगर आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहो तो ये होगा और दूर. आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि और दूर. और इस सिचुएशन में आप किसी को और दूर जाने के लिए कब बोलोगे? व्हेन यू आर हैविंग अ ग्रेट इमोशन. सो थ्रू दैट यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड कि ardor is a great emotion or passion. Moving to the next word. Next word is arduous, which means extremely difficult or laborious. Laborious again means the same, and यहाँ पे labor आता है, so you can relate it कि labor सबसे ज़्यादा difficult काम करते हैं. So to remember this word, even if you pronounce it, तो यहाँ पे hard आ रहा है. Just इसके आगे एक imaginary H लगा दो, so it is arduous. So through that also you can remember कि arduous, which means a difficult task, which makes it really hard. So I think now it is clear how to remember it. Moving to the next word. Next is argot, which means a specialized vocabulary used by a group. और जैसा कि हमने arduous के लिए किया, we can do it for this word as well. यहाँ पे अगर आप इसको pronounce करोगे तो आप इसको argot पढ़ोगे, and आपको imaginary एक F बना देना है यहाँ पे, which means forgot. And during vocabulary session सबसे ज़्यादा आप क्या चीज़ बोलते हो? So that is vocabulary itself.
So through that you can remember ki argot means we are forgetting something, and what we are forgetting is the vocabulary. So specialized vocabulary used by a group. Moving to the next word. Next is arrest, which means to stop or seize. So this is very easy word to remember. And still, if you find any difficulty to remember this word, so Munawar Faruqi is there to make you learn. With this, we have covered the third part of the lecture series. And इस पूरे series में 40 videos होंगे. And in each video, we are covering 20 words. तो इस तरीके से हम पूरे 800 words cover करेंगे. And if you focus to these videos really well, so there are high chance कि आप 80 to 90% vocab के questions exam में करके आओगे. So these are the words जिनकी possibility काफी high है to come in any exam, be it a government exam or a MBA entrance exam. So kindly go through the video very seriously. And yeah, subscribe, share and like next video. Till then, keep learning.